ट्रेडिशन को एंथ्रो में समझते हैं, है ना। सोशियोलॉजी लार्जली स्टडी ऑफ मॉडर्न, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में टर्म है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो जब अपन मॉडर्निटी समझ ही रहे हैं तो उसके साथ ट्रेडिशन ऑल्सो। लुक, जब डिफाइन करना हो ट्रेडिशन को तो सिंपल फंडा कि ऑल स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम्स, राइट, that existed before modernity and modernization referred as tradition, right? All social facts, all social realities, right, all social structures, institutions that existed before modernity and modernization referred as tradition. Tradition is largely characterized by four value themes or characteristics. Four characteristics लिख लो, four features, four features, characterized by four features or four themes, themes, four features or four themes, right? First, hierarchy, hierarchy. Second, holism or collectivity, orientation, collectivity, orientation, orientation, right? Transcendence or transcendental orientation, transcendence or transcendental orientation. Transcendence, trans समझते हो ना? Transcendental world means what? Other world, मतलब notions of heaven, hell, etc. That is trans world, है ना, other world. And lastly, continuity. Continuity, right? Continuity. अब इस these are largely, you know, like opposite to hierarchy हो गया, right? तो equality. Modern क्या है? Largely equality in every sphere, yeah. Holism हो गया है, collectivity orientation. This is opposite to individualism, right? Transcendence, otherworldly orientation. Modern क्या है? This worldly, yes ना? This worldly. And continuity opposite to change. आज क्या है? We are in society, we highly experiencing, you know, change. कल आप इंजीनियर बने, आज आप IAS के लिए ट्राई कर रहे हैं, कल आप IAS बनने के बाद you will think becoming विधायक, MLA, नहीं, बिजनेस पर्सन ऑल्सो, या यस, सो हो, मतलब change, that is change. Look, every structural aspect of society, every structural aspect बोले तो institutions, structure means what? Institution, values and norms. थोड़ा अब माइंड को ऐसा फास्ट करिए, जब भी मेरे मतलब when I use the term structure, that means institution. इसीलिए बेसिक आपको बताया पहले, structure means institutions, है ना, राइट? ऑटोमेटेड एकदम आना चाहिए दिमाग में, structure is equal to institutions, राइट? तो every structural aspect characterized by hierarchy in past, in tradition. ये tradition का एक feature है. चाहे family, तो family में hierarchy of men and women, yes or no, right? Economy, economy में hierarchy of occupations, yes or no, yes ना? जैसे Brahmins, occupation, learning, knowledge, education, isn't it? Like Kshatriyas, Vaisya castes, isn't it? Like hierarchy of occupation, hierarchy of status position, hierarchy of status position, yes or no? That we can see in caste positions also. There is hierarchy, superior and subordinate hierarchies, yes or no? Some caste groups in superior hierarchy, right? And some caste groups in subordinate, lower hierarchies, yes na? So hierarchy, tradition was characterized by hierarchy, isn't it? Right, men and women ka hierarchy,
right? Men mostly domesticated, or women mostly domesticated. Women mostly domesticated and men participating in public sphere. Superior कौन? Women or men? Men superior, women subordinated. Traditionally. लेकिन आज modern time में every aspect में constitution declared equality irrespective of gender, irrespective of caste, irrespective of ethnicity. Yes na? Right. Equality is aspect, can be seen in every structural sphere, and inequality relates to hierarchy, relates to tradition. है ना भाई? Continuously for centuries ये जो hierarchy of occupation है ना, that continued in Indian society, and here caste groups were organized in Jajmani system in terms of occupation. Some caste were Kamin caste, service providing caste, and some other caste were Jajman caste. Kamin caste generation to generation provided services to Jajman caste. Yes ना? और ये hierarchical order था. Hierarchy is nothing but rank ordering or gradation of status of the persons. Rank ordering or gradation of occupations of the persons in society. Some occupations, superior, chanting mantras. Some occupations, inferior, like cleaning, scavenging. Yes na? Right. And this hierarchy of occupation, hierarchy of status continued for centuries in past. और ये केवल इंडियन सोसाइटी में नहीं था. Yes ना? European society also hierarchical in nature. Hierarchy of what? States. है ना? State का hierarchy था. इसमें first state clergy, second state and third state commoners. Within this also there was hierarchy. है ना? Clergy में भी hierarchy. Right? Higher clergy, lower clergy. है ना? ये लॉर्ड्स में भी हायरार्की, लॉर्ड्स ऑफ स्वर्ड्स खानदानी जमींदार, एंड लॉर्ड्स ऑफ रॉब्स जो अपने मेहनत से, यस ना, लॉर्ड्स ऑफ रॉब्स, राइट. तो लॉर्ड्स ऑफ रॉब्स जैसे लालू प्रसाद जी, अभी जमीन वाला ही मामला चल रहा है ना, नोटिस हो गया है, राइट. सो लॉर्ड्स ऑफ रॉब्स, इज इट, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकेम लैंडलॉर्ड, राइट. यस, लिखना नहीं है, एग्जाम्पल समझने के लिए बोला मैंने. उधर अब केवल यही नहीं, अदर स्टेट्स में भी हैं, है ना. महाराष्ट्र में भी पवार एंड फैमिली लॉर्ड्स ऑफ रॉब्स, इज इट. बहुत जमीन है उनके पास भी, कोऑपरेटिव लैंड्स, या कोऑपरेटिव तो पूरा कंट्रोल्ड बाय पवार साहिब. यस ना, कोऑपरेटिव्स, यस. लेकिन हाँ, पवार साहब का कोऑपरेटिव को थोड़ा डेवलपमेंट भी महाराष्ट्र कैन नॉट फॉरगेट. यस, महाराष्ट्र डेवलप्ड, और उस डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव मूवमेंट का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ओके. सो दिस इज लाइक विद इन हायरार्की ऑल्सो हायरार्कीज, हायरार्की विद इन हायरार्कीज. इंडिया में भी कास्ट है, उसके अंदर भी सब कास्ट है ना. वैसे कास्ट है, उसके अंदर कितने कास्ट, सब कास्ट, अग्रवाल्स, केजरीवाल्स, मित्तल्स, सिंघल्स. यस ना, यस ना. जाट्स, many subcaste. Yes or no? Malik, yes, or Chaudhary, Balyan, yes na? Within also, right? So caste within, so hierarchy within. This is example of hierarchy within hierarchy, and this was feature of tradition. आज भी tradition continue कर रहा है. You will not see Kejriwals, marrying to Maheshwaris. Maheshwari marries to Kejriwal, but Kejriwal consider themselves, मतलब within caste also superiority and, yeah, राजस्थान का ठाकुर, you will not see marrying to यूपी का ठाकुर और बिहार का ठाकुर. They don't consider them as ठाकुर्स, right? So राजस्थान caste के within भी hierarchies, isn't it? Right? We'll see like the caste groups scheduled in constitution. Within that also there are many caste groups, isn't it? है ना? Right? Jatovs, Mahars, right? Paswans. Within that, मतलब hierarchy had been one feature of traditional societies, be that Indian society or European society. Hierarchy, not only society, like a status system में
that we see rank ordering and gradation in occupation hierarchy, within family hierarchy, in polity hierarchy, like religion में अभी बताए हैं clergy hierarchy, every aspect of society characterized by some hierarchy. Similarly, holism or collectivity, this is opposite to modern notion of individualism. आज आप individual oriented हैं या collectivity? अरे इंडिविजुअल ओरिएंटेशन आप में है, आप इंडिविजुअल प्रिपेयरिंग टू बिकम आईएएस, यस और नो? पूरा कलेक्टिविटी नहीं प्रिपेयर कर रहा है आपके साथ, और कलेक्टिविटी प्रिपेयर करेगा तो नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि कंपटीशन इंडिविजुअल का होता, इंडिविजुअल से होता, यस और नो? राइट? तो यस, कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन, राइट? जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आपका है, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता? कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन. यू विल सी इंडिया में आज भी ये नोशन कंटिन्यू हो रहा है. People for 5 days, 2 days travel from America to India to do Nagin dance in the marriage. Right? मतलब अमेरिका से इंडिया आ जाते 15 days, 20 days before prelims. नहीं, दोस्त की शादी में चला गया था सर, पीटी खराब हो गया इस बार. अरे भाई क्या जरूरत था? तो that is collectivity orientation. पीटी तो अगले साल भी होगा सर, शादी तो एक ही बार हो रहा है. Right? तो मतलब strong collectivity orientation that we can see even in today's society, that is aspect of tradition, that is aspect of good and bad की बात नहीं है. मैं बार बार आपको कहूंगा कि जब भी अपन कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें नोशन ऑफ गुड एंड बैड नहीं लेकर आएंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, एंड दिस इज द फैक्ट कि कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन कंटिन्यूज डिस्पाइट न्यूक्लियराइजेशन, डिस्पाइट न्यूक्लियराइजेशन. Isn't it? Collectivity orientation. Just me and my brother, we both, like he is based in Noida, I am based here in Delhi. Isn't it? Separated nuclear families may, but collectivity orientation is still very strong. Isn't it? So this is something, traditional attribute. Good and bad की बात नहीं है. This is traditional attribute. In our, occupations, we have individual orientations. Lifestyle, individual orientation. Yes or no? Right? So this is right. Modernity, India की जब बात करते हैं तो modernity as well as tradition continues. Isn't it? Continues, है ना? Tradition. तो इसीलिए ये सब एग्जाम्पल हमें आज भी देखने को मिलता है कि men are superior and women subordinate, superior and subordinate. Families में as well as society, that subordination can be seen in form of lesser representation of women in politics. Yes or no? Even if women are represented in politics like Panchayati Raj institution, effective decisions taken by men, not by women. Sarpanch pati, pati pradhan. Yes na? Right. So this is like getting a point or not, right? So collectivity, right? Orientation. Collectivity orientation is their aspect of tradition. Yes na? Hierarchy aspect of tradition. Men and women ka hierarchy that we see in every sphere, that is aspect of tradition. Yes na? Right. So that is, ये होलिज्म टर्म स्टैंडर्डाइज यूसेज है. बाकी इसका मीनिंग क्या होता है? कलेक्टिविटी. होलिज्म मतलब कि इंडिविजुअल इज टोटली एनगल्फ्ड इन कलेक्टिविटी. पास्ट में तो यही था ना कि इंडिविजुअल वाज नोन बाय स्टेट. यस और नो? कि किस स्टेट को बिलोंग कर रहा है, इंडिविजुअल किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है. यस ना? मतलब इंडिविजुअल टोटली एनगल्फ्ड इन कलेक्टिविटी, एनगल्फ्ड इन फैमिली. जो फैमिली का आइडेंटिटी वही इंडिविजुअल का आइडेंटिटी, राइट? जो कास्ट का आइडेंटिटी वही इंडिविजुअल का आइडेंटिटी, जो रिलीजियस आइडेंटिटी वही इंडिविजुअल आइडेंटिटी, टोटली इनगल्फ्ड इन कलेक्टिविटीज. और ये सब कलेक्टिविटी के एग्जांपल हो गए. ज्वाइंट फैमिली, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, दीज आर एग्जांपल ऑफ कलेक्टिविटी. आज भी है कंटिन्यूएशन. तमिल एथनिसिटी, तेलुगु एथनिसिटी, मराठी एथनिसिटी, ये सब क्या है? कलेक्टिविटी. और सच कॉन्शियसनेस कंटिन्यूड ना. Yes na? Blacks and whites, isn't it? Consciousness, racial and ethnic consciousness continues in America. Yes or no? उसी पे movement भी चलता. Black life matters, isn't it? Right. So these are aspects of tradition. है ना? Good and bad नहीं. These are aspects of tradition. जब भी literature में हम लिखेंगे तो इसको कहेंगे tradition. Sociological literature में. Got this? Then transcendence. Transcendence is opposite to दिस वर्ल्डली, टेम्पोरल. आज आपका ओरिएंटेशन टेम्पोरल है या ट्रांसेंडेंस है? आज आप क्लास कर रहे हैं इस दुनिया में आईएएस बनने के लिए. यस ना? दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन, योर ओरिएंटेशन इज दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन. लेकिन पास्ट में
even occupations taken with that worldly orientation, ki such occupation, prescribed by God. One is born in particular caste by God, God's grace, and God wants individual to take particular occupation. Because of belief in such, things, we see lesser change in traditional society, less change in traditional society. In modern society, in a single generation, intergenerational mobility can be seen. Yes or no? A person is starting his career as a worker, then manager, then CEO of the company. Yes or no? एक ही जनरेशन में चेंज होता है कि नहीं होता? Is it? Because today the person is oriented towards this worldly materialistic achievement. Yes or no? Not trans worldly, right? A spiritual attainments, right? Rather this worldly materialistic achievements. Getting your point or not? So this worldly orientation is modern and other worldly orientation traditional. अब ये every aspect जरा बैठ के घर पे thought करना, तो in every aspect you will find marriage. तो मैरिज में ये जो अभी मैंने बताया 7 फेरे, डोंट यू थिंक इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर वर्ल्डली? इज इट फैमिली, राइट? अदर वर्ल्डली, राइट? पिता माँ, पिताजी को क्या बोलते हैं ट्रेडिशनली इंडिया में भी? पिता माँ. इज इट? राइट? एंड नॉर्म्स एज वेल एज वैल्यूज लार्जली डिफाइंड बाय थियोलॉजिकल टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट. आज भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन आप देखते कि लोग बोलते कि भाई लाइक पत्नी हो तो सीता जी के जैसी. यस और नो? तो दैट ओरिएंटेशन इज ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन, राइट? कुछ लोग ये भी बोलते कि भाई बेटी हो तो इंदिरा नूई के जैसी. यस ना? गेटिंग योर पॉइंट? सो दिस इज मॉडर्न, दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन. यस और नो? दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन. Getting your point? So in every aspect you will see, in occupation, in education, आप जो भी education ले रहे हो, salvation in other world or achievement, material achievement in this world. अरे material achievement का मतलब कि क्या IAS बनने के बाद साधु बनना है, या material growth भी, material prosperity भी? Yes ना? House, car, yes ना? Luxuries, yes ना? वो भी तो एक factor है ना कि सब government के खर्चे पे होगा, right? All luxuries at the cost of government, है ना? Right? So that is also, that is this worldly orientation, not that worldly. Salvation का orientation नहीं है. Yes ना? Damnation का orientation नहीं है. This worldly orientation. Today's society में continuity, no. Modern society characterized by change, be that food habits, lifestyle, dress code. Yes ना? Change is the feature of modern and continuity feature of tradition. Continuity feature of tradition. In traditional society, continuity was cherished, continuity was celebrated. In modern society, change is celebrated. Yes or no? Right? So these are the 4, features. These are, ये जो भी आप देखोगे, be that occupational continuity, continuity of Jajmani system, bonded labor system, domestication of women, right? ये सब past में, tradition में continued for long. Yes or no? Right? Nobody questioned that. Getting your point? Jajmani also kind of enslavement, but that was not questioned for long because people, cherished continuity. Isn't it? Continuity. Yes, na? Right. Aaj modern times mein change. We cherish all change. We want change. Right? In lifestyle, culture, occupation, institutions. Yes, na? And that's what we see. In modern society, high rate of differentiation of structure. High rate of differentiation of structure. In past 40 years, structural differentiation, nuclear family. In Indian society, I can say, कि in past 70, 75 years, nuclear family to single parent family, separated families, unmarried cohabitation, live in relationship, yes na? As well as same sex marriages, right? Heterosexuality to homosexuality, right? So all such changes, feature of society, modern society, yes na? But in tradition, continuity of joint family system, isn't it? Continuity of joint family system. Got this point? Right, continuity of occupation,
है ना, continuity of knowledge, education, कि Brahmins, for long had, monopoly over knowledge and education, because that society cherished continuity. Continuity of, like occupations, कि Brahmins had this, occupation of educating, isn't it, learning and educating others, isn't it, that cannot be taken by others. So that was aspect of, traditional society. Modern society may everyone, yes, now, right, we have change, we are witnessing, change, right. So these are, I hope understood the concept.